हेलो गाइस, मेरा नाम रोहित है एंड मैं चांसन कार्ड मतलब अपॉर्चुनिटी कार्ड वीजा पे जर्मनी आया था। इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। तो जैसे मेरे पहला वीडियो है चांसन कार्ड वीजा के ऊपर, क्या चांसन कार्ड वीजा होता है, कैसे आप अप्लाई करते हो, कैसे आप जर्मनी में आ सकते हो एंड ऑल सब इंफॉर्मेशन मैंने दिया था प्रॉपरली विथ वीडियो। तो मैं माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने ये सेकंड वीडियो बनाने के लिए काफी टाइम लगाया। जैसे कि जर्मनी में आके इधर सेटल होना इज नॉट दैट इजी, इतना भी इजी नहीं है। और आपको थोड़ा भी सपोर्ट नहीं है ना किसी का, तो ये काफी काफी मतलब मुश्किल है। तो जैसे कि मेरे साथ है सैंड्रा, जिसने मुझे काफी हेल्प की है वीजा के रिगार्डिंग। जर्मनी आने के पहले कैसे मैं लाइक विदाउट एजेंट जर्मनी में आया था, तो इसके रिगार्डिंग उसने बहुत ही हेल्प की है मेरी। अभी बात करने वाले हैं कि हाउ आई कन्वर्ट माई चांस कार्ड वीजा इनटू वर्क परमिट, और उसमें क्या क्या चीजों मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मेरा इंट्रोडक्शन है, तो सैंड्रा अभी उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देगी। सो Hi, मेरा नाम Sandra है. I'm German citizen. I live in northern part of Germany near Hamburg. And yeah, as Rohit already told you, I was helping him about all these rules and regulation regarding this Chancenkarte and convert Chancenkarte to work visa to meet the requirements and go to this appointment at the authorities. And yeah, this is really quite difficult as I learned so far. So yeah, a lot of documentation is mandatory for this. अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, स्ट्रैटेजीज टू फाइंड जॉब्स इन जर्मनी। तो आप कौन सी स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल कर सकते हो, बट इसके पहले मैं बताना चाहता हूँ ये वीडियो रहेगा हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में। बिकॉज मैं हिंदी बोल सकता हूँ, मैं इंडियन सिटीजन, सांद्रा हिंदी नहीं बोल सकती बिकॉज वो जर्मन सिटीजन है, तो वो इंग्लिश एंड जर्मन लैंग्वेज ये बोल सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट, मैं इंडिया में था तब से मैं जॉब कंटिन्यूअसली फाइंड कर रहा था इन जर्मनी में। और मैंने जर्मन स्टाइल का सीवी बनाया था जो जर्मनी में इम्पोर्टेंट रहता है। तो जैसे कि मैंने क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज की थी, वेरी इंपॉर्टेंट, मेनली सबसे इंपॉर्टेंट साइट से स्टेपस्टोन, जिंक एंड द लिंक्डइन, ये इंपॉर्टेंट साइट से। बट मैं हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो एक काफी अच्छी साइट है होटल करियर बोल के, तो उसके ऊपर भी बहुत सारे होटल्स के रिगार्डिंग जॉब्स भी अवेलेबल रहती। एंड इसके अलावा सैंड्रा भी बात करेगी, इंपॉर्टेंट जो रहता है जॉब फाइंड करने के लिए, सीवी एंड कवर लेटर। सो नाउ यू कैन टॉक अबाउट सीवी एंड कवर लेटर। Okay. Yeah, the two most important documents when you apply for a job in Germany is, of course, the CV and then the cover letter. CV has to be German structured, so basic information is a bit about your background and what you want to do, and then all your work experience and your education. This one shouldn't be longer than maximum 2 pages. So one is okay, but maximum two. And then regarding the cover letter, so also kind of like motivation letter where you mention why you want to get this job, why you want to work for this company, always depending a bit on the position, but usually this one should be maximum 1 page, because if you give too much information for the first time, I know also from our HR department in the company where I'm working, they will not read this at all. So if you mention too much, if you send the cover letter with 2 or 3 pages, they will not read it, because for first impression this Yes, is true. too much. And also when you send your job application via email, just make sure that you keep it short and simple. 2 or 3 sentences like please find enclosed my job application, and then maybe a bit about yourself, but then this is enough. So yeah, we like to keep these things short and simple. वन मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सांद्रा बताएगी आपको। It's very important to start working directly once you come to Germany, either mini job or this part-time job, so these 20 hours per week, which is allowed with this Chancenkarte visa, because not only to cover your daily or monthly expenses like rent or food or whatever, but also that companies where you apply for full-time job can see this person is first of all allowed to work in Germany, so then they got the positive impression about you, and also to get to know slowly about the work culture, and also learn a bit German in this daily life, like in your job, or also when you talk with your colleagues, maybe with customers, guests, whatever. So these are the two, yeah,
main things or main reasons why you should try to directly start working in Germany. One of the important topic, one of the important point from this video is what documents you required for converting Chancenkarte visa into work permit. In detail, Sandra will talk about this. Yeah, so when you want to convert your Chancenkarte into the work visa, there are some very important documents. You will also get the list from Ausländerbehörde, but it's very important and also save some time for you when you send all these documents before your appointment to the Ausländerbehörde. So the first thing you need, of course, is your passport and your visa. So for example, this Chancenkarte visa is like a sticker in your passport, so you have all in one. Then you need the digital photo. Printout versions are not accepted anymore, so you get like a QR code for this. तो गाइस अभी मेरा अपॉइंटमेंट है आज आउसलैंडर बेहोर्ड के साथ 3 o'clock. सो अभी मुझे जाना है, सब डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल सब रेडी है, बट एक्चुअली उसके लिए डिजिटल प्रिंट आउट भी लगता है, एक डिजिटल. सो मैंने डिजिटल लिया है. सो इसमें डिजिटल में ऐसा रहता है कि आपको दिखाता हूँ मैं कैसा एक्चुअल में. नो मेरा ओके. सो उन्होंने चिपकाया है, बट डिजिटल में मेरा एक फोटो है. सो ओपन. ओके, सो लाइक दिस इज डिजिटल फोटो. ऐसा लगता है आउसलैंडर बेहोर्ड के पास. सो ये अराउंड €5.95. सो €6 में वो मुझे मिला है. तो यहाँ ये एक्सपेंसिव तो है, बट उधर आउसलैंडर में तो मैंडेटरी है. नॉर्मल फोटोशॉप में जाओगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. सो बेटर एक नॉर्मल इधर. विच टाइप ऑफ शॉप इट वॉज दिस? This was kind of drugstore. ड्रग स्टोर. ओके, ड्रग स्टोर. सो बहुत क्विकली हुआ एकदम, मतलब 2 मिनट में सब कुछ फोटो एंड ऑल प्रिंट आउट एकदम फटाक से हुआ. मेरे पास और 40 मिनट्स है. सो देखते हैं उधर का भी एक्सपीरियंस एंड ऑल सब. तो मेरा चांसन कार्ड वीज़ा है, वो मुझे चेंज करना है वर्क परमिट में. सो उसके लिए अपॉइंटमेंट है सब. तो ये मैं बैड ओल्ड स्लो में हूँ, तो मैं बाकी की चीज़ें भी धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा. थैंक यू. Then the two main documents from your employer is the work contract. This one has to include the qualified job title, the working hours, the start date, the salary, and the tasks you have to do in this company. Second one document is called Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis. This document can be downloaded from the Federal Employment Agency. This is official document where your employer has to mention first of all the company details, the personal details of the employee, and then also again the tasks, very detailed, so that these tasks match with the job title. And then some more information also about vacation days. Yes, right. Then the employee has to submit his own qualification documents. For example, like in your case, ZEP certificate, that the bachelor degree is fully recognized here in Germany, and any other document, certificates you have from Additional. your previous employer, like Or job experience. relieving letter, Yes, right. maybe language certificate, if you did some additional, if you have some additional experience, something like this. So all regarding your work experience. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी बोल सकते हो आप. तो मैं बात करना चाहता हूँ, हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज हमारा आउसलैंडर बेहोर्ड में एक्सपीरियंस कैसा था. हमारा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये आउसलैंडर बेहोर्ड में ओनली जर्मनी बात करते हैं. सो इसके बारे में मोर डिटेल में सैंड्रा बात करेगी, बिकॉज मैंने सैंड्रा को मेरे साथ लेके गया था हेल्प के लिए. बिकॉज आउसलैंडर बेहोर्ड वो इंग्लिश में बात नहीं करते हैं और उनको ओनली जर्मनी में बात करना अलाउ है, तो थोड़ा डिफिकल्ट है. सो सैंड्रा विल टॉक अबाउट दिस. So this appointment at the Ausländerbehörde only takes place in German language. So if you do not speak fluent German, then also in this invitation letter is mentioned that you have to bring a person who will translate for you. This doesn't has to be an official like translator or something, but only a friend, a family member, or if you need an official person, then of course you can also like hire someone to translate for you.
But to be honest, in your case, it wasn't that much talking in Yes. German. This person at the Ausländerbehörde was only checking again through the documents, Okay. was just asking one or two questions. You also were able to answer. Yes, right. And then in the first step, you got this, it's called Bescheinigung, Yes. because the work visa itself, until this card is printed, it will take around 4 weeks, and that the employer knows that you are already allowed to work full time. You will get like a normal paper where it's mentioned that from this date you are allowed to work in Correct. full time, so that no one gets any problems if some authorities will check about this. Yes, right. And this Bishanigung, we have to ask from our side because these people sometimes also forget about this. Yeah. So it's very important. हमने सामने से अप्रोच करना चाहिए उनको कि हमें बिशानिगुंग चाहिए बिकॉज हमें वर्क चालू करना है ये पर्टिकुलर डेट से तो आपको बिशानिगुंग देंगे उसी टाइम मेंशन करके कि आप अभी अलाउ हो जर्मनी में वो पर्टिकुलर आउटलेट के लिए काम करने के लिए फुल टाइम सबसे इम्पोर्टेंट बिशानिगुंग. So anything else you would like to tell me? If you speak a bit German, basic That's German, awesome. then you can for sure go alone to this appointment. So this is not kind of like a job interview or something. Yeah. They will just check through the documents and will forward this to the Federal Employment Agency, that this agency will check about all the details, if the company is allowed to hire you, if the job is qualified, if the salary is high enough. So Yes, that's right. why this is not kind of like job interview. One more important topic हम बात करना चाहते हैं cost. So कितना खर्चा लगा हमें? The costs, yeah. So for this work visa itself, for this card you will get, same size as our ID card, you have to pay around around 100 euro, and it will take around 4 weeks until you get the printed version. And for the digital photos you have to submit, or this QR code, as we mentioned before, when you go to like a drugstore DM, for example, you Yes. have to pay around 5 5 euro. euro. And when you go to professional Photograph Photoshop studio. Yeah. photo studio, right, Right. then this will cost between 15 to 20 euros. And So also one more cost is post, sending the post. This is something how Yeah. much I had to pay around 15 euro 15 we euro and pay still for they this. lost my document. I didn't get any refund and even I filed the case against this, nothing happened. तो आपके ऊपर है आपको क्या करना है बिकॉज बहुत स्ट्रेस में था 2 दिन से डॉक्यूमेंट आउसलैंडर बेहोर्ड के पास नहीं पहुंचे एंड देन बाद में हमने उनको अप्रोच किया कि ईमेल के द्वारा सेंड करेंगे तो चलेगा तो आउसलैंडर बेहोर्ड काफ़ी अच्छे थे सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ और बिकॉज ऑफ सांद्रा काफ़ी हेल्प हुई चीज़ें सभी इजीली सॉर्टेड आउट हो जाए तो मैं भी आपको लाइक सजेस्ट करना चाहता हूँ कोई लोकल जर्मन पर्सन आपका फ्रेंड बनाए तो आप उनको साथ में लेके जा सकते हो या उनसे भी जानकारी ले सकते हो वन मोर थिंग नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट दिस booking the appointment for collecting this visa. Yeah, sure. Yeah, this was kind of funny. After this appointment we got a small piece of paper, you can say, with the QR code, and this person said, scan this QR code and you can book an appointment to collect the work visa. And I was like, yeah, okay, we have some time, so 4 weeks, then in 2 or 3 weeks we will scan and book the appointment. But was totally wrong with this, because when we wanted to book the appointment to collect the work visa, it was showing from that date we wanted to book the next possible or available appointment was in 5 weeks. Oh, Yeah, so 5 weeks. So we lost a lot of times. When you do not get kind of like a letter with the appointment when you can collect the visa, you have to scan this QR code directly after your appointment to make the next appointment to collect your document. That's very important. It took so long, but still we did some idea to collect this card. जुगाड़. सो यही सब कुछ मेरा एक्सपीरियंस था जैसे मुझे बहुत हेल्प की सांद्रा ने बहुत बहुत रेयर लोग मिलते हैं इधर जर्मनी में इतना हेल्प करते हैं सच्ची में शुक्रगुजार रहूँगा सांद्रा का इतना हेल्प की मुझे एंड दिस वीडियो हमें बनाने का पर्पज यही था कि
आप कैसे जर्मनी में आने के बाद ये चीज़ें टैकल कर सकते हो। एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू ऐड इन दिस वीडियो नाउ? Yeah, just that it's really, as I got to know, really confusing about all these documents you need, appointments you need, these requirements you have to meet. So you really have to study about this. What I personally can recommend, and I think also you can recommend, there's this website from the Federal Employment Agency. This is called Make It in Germany. There are also a lot of information already written on one page so that you have everything at a glance. And this is very helpful. Yes, But right. of course, you have to Patience. check So very carefully about and have, yeah, a lot of patience. सो गाइस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वर्क वीज़ा कैसे रहता है जर्मनी का। सो दिस इज़ माय Aufenthalt वर्क वीज़ा कार्ड। सो व्हाट यू कॉल दिस समथिंग Aufenthalt Aufenthaltstitel. Aufenthaltstitel ओके। Genau. जैसे आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के साथ, मैं अभी नेक्स्ट वीडियो प्लानिंग करूँगा कैसे एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हैं हम जर्मनी में। जैसे कि मैंने क्विकली वर्क चालू करने के बाद 2 महीने में ही एम्प्लॉयर चेंज का रिक्वेस्ट डाला था, तो वो भी काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए, तो मैं वो भी वीडियोज़ बनाने का ट्राई करूँगा। इन जर्मनी में रहना, सब मैनेज करना, डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी मुश्किल है, इसलिए मैं वीडियो बहुत लेट बना रहा हूँ और बनाया। आई एम रियली सॉरी, बट नेक्स्ट टाइम से मैं ट्राई करूँगा मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकूँ। नेक्स्ट टॉपिक्स विल बी जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस। बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा मुझे, बट मैंने ड्राइविंग लाइसेंस की एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर दी। बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके आया करूँगा, ट्राई करूँगा, काफ़ी नया ही एक्सपीरियंस। सो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आप शेयर भी करिए वीडियो, आपको अच्छा लगा तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। Bye.